चलिए स्टार्टिंग विद अ फ्रेश सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट from the perspective of your examination also, or from the perspective of you being a legal professional. This subject is basically, we can say, this is not a subject to study, something by which a system or a nation runs. तो बेसिकली ये ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं जिससे इस पूरे देश को चलाने के लिए चीज़ें होती हैं, समझ में आती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली in our coaching we will be covering in two parts. So part 1, if I talk about part 1, that is up to DPSP. This part 1 of this act, that is from article 1 till DPSP, I will be covering all this part plus some important terms and concepts. So I will be not taking up every concept or every topic related to the constitution. Some topics are very simple, very flat on. For example, what do you mean by a bill, how bill are proposed, how bill are passed, and the powers of legislatures, power of executives, and ये बहुत basics ही है. I will not covering all this topic. All this topic will be covered by some other teacher. My focus will be to make you understand the basic details of part 1. I called it part 1, that is preamble से लेके DPSP. ठीक है, तो this is what I will be covering in my class. So I will be teaching not the complete constitution but the important aspects, important part, primarily preamble up to DPSP. Apart from that, emergency and amendments portion I will be covering. ठीक है, जिन लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं कॉप क्लासेस को, एज यूजुअल एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ हाउ टू मेक कॉपी. तो सिंपल सा प्रोसेस है. हमारी क्लास ब्रॉडली 3 पार्ट पे चलेगी. I will using the board that is on your screen and explaining it. Third, I'm not using board, I'm simply explaining it. And third is the dictation. These are the 3 broad things that will happen in the class. आपको हर एक चीज लिखना है. तो मोस्टली नॉर्मली क्या होता है, मैं जो बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ वो लिखते हैं लोग, डिक्टेशन लिखते हैं. दे डू नॉट राइट दिस पार्ट विच आई एम स्पीकिंग, दे आर नॉट राइटिंग दिस पार्ट. आपको ये पार्ट भी लिखना है प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जरूरी नहीं है आपको मेरी लैंग्वेज में लिखना है. द लैंग्वेज यू आर अंडरस्टैंडिंग आप उसमें लिख सकते हैं. आप अपनी कॉपी के पेज को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए. तो दिस इज, सपोज दिस इज योर कॉपी पेज. तो मेक श्योर कॉपी का नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो यू मेक योर राइटिंग्स नोट्स इनटू दिस पोर्शन ओनली. चारों तरफ से इतना छोटा होना चाहिए. कॉपी मस्ट बी प्लेन पेज कॉपी. डो नॉट यूज द लाइनिंग पेज, है ना. तो लाइनिंग पेज यूज नहीं करेंगे, प्लेन पेज कॉपी को यूज करेंगे. सेकेंडली, डेट्स आप फिक्स करेंगे कॉपी के ऊपर, कौन से पेज पे कौन सी डेट आएगी. पेज नंबर आप फिक्स करेंगे. ठीक है, तो कॉपी बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है. चलिए, एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉडली
important part cover करूँगा, that is up to DPSP. For that I will be taking 30 to 35 classes, है ना, तो लगभग 30 to 35 classes will be, ठीक है. तो if I say 30 to 35 classes, तो per page per class there is an average of 10 pages, ठीक है. तो approximately 300 pages classes, 300 pages copies you have to make, ठीक है. चलिए, the topics broadly that will be covering in the next topics that will be cover. So broadly the topics which I will be covering while taking 30 to 35 classes will be concept, I will term constitution, we will be understanding the meaning of the term constitution, ठीक है. We will understand the need of constitution, need of constitution. We will understand the term constitutionalism. What do you mean by term constitutionalism? We'll understand the difference between constitution, constitutionalism, and constitutional law. तो ये जो तीन टर्मोलॉजीज हैं इनको अलग अलग यूज किया जाता है या दे आर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, क्या एक दूसरे के सिनोनिम है, इनमें क्या डिफरेंस फॉल करता है वो समझने की कोशिश करेंगे. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So we will try to understand how historically we have developed this constitution, ठीक है. Then we will be covering basic, very basic concept, that is salient feature of Indian constitution. Then we will be covering rules of interpretation of Indian constitution, how Indian constitution is to be interpreted, rules of interpretations of Indian constitution, some legal maxims. I will be covering some legal maxims related to rules of interpretation. Okay. Once we are done into this idea, then we move into our second phase of this learning, that is amendment in Indian Constitution. Amendment of Indian Constitution. We will try to understand the amendment, how the amendments are done, what is the process of amendment, and how the validity of amendments are being checked, number of amendments made till date, purposes of such amendments, then we will try to understand emergency provisions. Under Indian Constitution. So we'll try to understand the emergency provisions under Indian Constitution. Once we are done with this idea, we move into the third phase of our learning, that is preamble. We'll understand the preamble. When we are studying the preamble, we will be studying meaning of terms, used in preamble,
Purpose of preamble, utility of preamble, amendment into preamble. So how preamble can be used, what is the benefits of preamble, why preamble is used, why the particular words are used in preamble, and everything. Once we are done with into this, we will move into the idea of fundamental rights. Once I move into the idea of fundamental right, so I will be first making you understand the meaning of term state. Then I will be covering all FR, all fundamental rights जितने भी हैं उन सबको cover करेंगे. Then we move into fundamental duties and DPSP. Once we have covered this, we will move into the idea of constitutional remedies. When I will be covering constitutional remedies, I will be doing writs, I will be doing judicial review, I will be doing judicial power of Supreme Courts, judicial powers of Supreme Court. Basically focus on SLP, PIL, original jurisdiction, and advisory jurisdiction. I will be covering other part also, but my main focus will be all this because that is important for us. Once we are done with this, we will try to understand the legislative power. Basic understanding of legislative powers. Okay. And power and privileges also. And we will cover the privileges. But this will not be done by focus because other teacher and other sir will tell you about this in detail. But I will also cover executive powers, where I will be covering pardon, commutation, etc. Apart from this, some other important concept that I will be covering will be first office of profit. So I will explain you the term office of profit. Second, I will explain you the term anti-defection law. Third, I will explain you the term fiduciary, or I can say cooperative federalism. Cooperative federalism. और अगर मौका मिला तो I will do the panchayats also, but not necessarily I will, but these are the broadly the area or line of action we will be doing in 30 to 35 days. When I will be teaching you fundamental rights, obviously I will be covering reservations and the minorities rights and everything, so I am not make you write here because that is a part of the course when we are studying the fundamental rights. Right to law, rule of law, everything, due process of law, procedural established by law, reasonableness, arbitrariness, and right to life, liberty, equality, privileges,
वो मैं सारा कुछ कवर करूंगा, because that is a part of fundamental right, but this is a broadly structure that I will be covering. If you ask me some important books, so firstly books are strongly recommended, है ना. This is a subject where you must, apart from my copy, must go through the books also. ठीक है, तो this is a subject where book is to be bought, है ना. तो you can buy J.N. Pandey. This is the first priority. I personally want you to go through this book rather than going any other book. If you are not interested in J.N. Pandey, then second recommendation can be MP Jain, which is another wonderful book. Third recommendation can be V.N. Shukla. So these are the three books, important books for student purpose. If you want to go for commentary, which is not at all recommended at your stage, but still the good commentaries on this is Sirvai, D.K. Basu. There is also a book D.K. Basu student edition, which is not recommended. So that is very small book. So please do not buy that. D.K. Basu, when I am talking about commentaries. That is 18 volume. Or you can say Dicey. These are very good books. Otherwise, there are so many other books also. Okay. But these are some good books which you can have. We have given you notes of Constitution, I think so, and you have the notes of Constitution. You will have my copy. You will have Bayer Act, but still, I strongly say buy J.N. Pandey, latest edition. जब भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक के बाद आपको एटलीस्ट 2 pages after every topic, at least 2 pages you should leave. That will help you to make an additions into your notes, because there will be addition, because we are into a developing phase right now, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपिंग फेज में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे चेंजेस को देखने मिलेगा, है ना. So we will be able to see so many changes. So with this idea, let us directly enter into the concept of the word constitution. ठीक है, लोगों को ज्वाइन करने दीजिए एक बार. ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टर्म Constitution. If I ask you, ठीक है, what is Constitution? क्या समझ में आता है आपको? What do you understand by the term Constitution? कोई बता सकता है? Raise your hand. Supreme law of land. Very good. Somebody has given me one answer, that is supreme law of land. अमृता ने बोला है. Anyone else? Anyone else can tell me what is the term constitution? देखिए, टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बाद में बात करेंगे. अगर मैं ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, मैं इसको मना नहीं करूंगा, डिनाई नहीं करूंगा. रूट ऑफ एवरी लॉ मैं डिनाई नहीं करूंगा. यू कैन डिफाइन इट एनीवन. ठीक है, देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इट इज अ फंडामेंटल सिस्टम, और आई कैन से इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल
or a set of principles. So what is constitution? Is a fundamental set of principles. है ना, which a nation needed for its functioning. तो कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स needed for functioning of a nation. That is, it is the rules, or I can say these are the principle of governance of any nation. How a particular nation is to be governed, उसका जो set rules हैं उसको constitution बोलते हैं, है ना. They are the rules of governance. तो अब आप मुझसे बोलेंगे कि रूल्स ऑफ गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ. बेसिकली ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी भी नेशंस को रन करने के लिए. दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स सेट फॉर a running of a state. आप वर्ल्ड में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, रिटन हो अनरिटन हो, डजंट मैटर, it have some set principle. Every state have set principles for their governance. वो रिटन होना या अनरिटन, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन और अनरिटन इंपॉर्टेंट नहीं है. टर्म कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होने से या अनरिटन होने से ही कुछ नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर मैं इस टर्म को बात करूं तो ये किसी भी चीज के सेट प्रिंसिपल्स हैं जिस पे उसकी रनिंग होती है ना. सिस्टम ऑन विच a state, or I can say a body, runs. अगर आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, you are in zero judicials. We don't have any written terms and condition, but instead there are certain set principles which governs the coaching. That is the constitution of that body. सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहती है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंटेन हेड, है ना, और जुरिस्प्रूडेंशियल हेड ऑफ अ नेशन. सुप्रीम कोर्ट कहती है व्हाट इज, कहती है कॉन्स्टिट्यूशन is the jurisprudential heads of any state, है ना. Jurisprudential head of the any state, or I can say it's a fountain head of any state. Fountain head of a state. अब मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय फाउंटेन हेड, ये कहना क्या चाह रहे हैं. तो सपोज दिस इज अ सोसाइटी. सोसाइटी इज फिल अप ऑफ रूल्स. Because society is full of people. People are filled up with thoughts. Thoughts give the idea of rules. But out of these rules, which rules are to be executed for the running of a state? There are so many rules. You know, society is filled up with rules. Or I can say principles. But out of these principles, which principles will be used for its governance? Which
these rules will be used for the functioning or the governance of the society, वो कौन डिसाइड करेगा? तो किया they put up a fountain. This is a fountain, you know, na fountain, this is a fountain valve. Now out of these rules, whichever rules will come and flow out of this, na, these will come for governance. This green area, this is a fountain, this is known as constitution. जो जिस तरीके से झरने का पानी, झरने के अंदर पानी होता है इतना सारा, उसमें से कौन कौन सा पानी बाहर निकलेगा फव्वारे से, वो कौन डिसाइड करता है? फव्वारा डिसाइड करता है, द फाउंटेन हेड डिसाइड करता है कि वो कौन से पानी को सक आउट करेगा, कितने पानी को सक आउट करेगा, कब कब सक आउट करेगा, है ना. दैट मशीनरी दैट डिसाइड द, वो मशीनरी जो है, जो डिसाइड करेगी कि विच रूल विल कम आउट ऑफ द सोसाइटी and run and help in the governance of that society, वो क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट इसी को बोलता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल्स विच एम्बैरेस द स्पिरिट ऑफ अ नेशन, है ना. तो ये रूल्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल. that embraces spirit of nation. तो किसी भी देश की आत्मा उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि उस देश की आत्मा क्या है. इतना क्लियर हो गया. तो एक चीज, एक पॉइंट हमको क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का या किसी भी नेशन का क्या है, वो बेसिक प्रिंसिपल है जिससे वो नेशन गवर्न करता है. वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे नेशन मैकेनाइज करेगा. ये पहला अंडरस्टैंडिंग है. तो पहले टर्मोलॉजी हमको क्लियर हो गई कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशन. द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन मींस द बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अंडर विच, है ना, नेशन गवर्न्स इट्स पॉलिटिक्स, नेशन गवर्न इट्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एवरीथिंग. सेकंड आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैकेनिज्म अंडर विच द लॉ आर टू बी मेड. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुकलेट है जिसके बेसिस पे किसी भी नेशन के लॉ बनते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ mechanism on which law is to be made. तो नेशन में किस तरीके के लॉज बनेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द फंक्शनल लॉ ऑफ नेशन. किसी भी नेशन में कौन सा लॉ फंक्शन करेगा, किस तरीके का लॉ फंक्शन करेगा, किस तरीके के प्रिंसिपल्स आएंगे निकल के, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, ये डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड कंसेप्ट. तो दो कंसेप्ट हो गए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को समझने के लिए, और ये यूनिवर्सल है, हर जगह लगते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी होगा ना, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक नेचर. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर.
व्हेन आई से ऑर्गेनिक इन नेचर, दैट मीन्स जो हम सेट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट रूल ऑफ प्रिंसिपल्स, वो हमेशा जीवित रहेंगे, वो ऑर्गेनिक नेचर के। व्हेन आई से दे आर ऑफ ऑर्गेनिक नेचर मींस दे बिहेव लाइक एन लिविंग ऑर्गन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सेट प्रिंसिपल है किसी भी नेशन के जो कैसा बिहेवियर रखते हैं, लिविंग नेचर का बिहेवियर रखते हैं। When I say it's a living nature behavior, what I mean you to understand. No nation can have fixed constitution. किसी भी देश में फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्स्ड मीनिंग नहीं हो सकता, इट चेंजेस, ग्रोज विद सोसाइटी। वो सेट ऑफ प्रिंसिपल किसी भी बेसिक सोसाइटी के, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, विद द सोसाइटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, खासियत होती है कॉन्स्टिट्यूशंस की, पहचान है कॉन्स्टिट्यूशंस की कि वो कभी भी फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, उसका कभी भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं हो सकता, उसका मीनिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी आइडियोलॉजीज विद द सोसाइटी चेंज हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख दिया, उसका वो मीनिंग फिक्स हो गया, अब वो उसी प्रोसेस से फॉलो किया जाएगा, नहीं, इट कीप ऑन चेंजिंग। और ये आप हमेशा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, जब भी देखोगे आप तो आप उसे चेंज करते हुए मिलेगा आपको। चलिए फोर्थ प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश करूं टर्म कॉन्स्टिट्यूशन को, कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द जुरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव, तो अगर मैं जुरिस्प्रूडेंशियल आइडिया से समझाऊं, तो कैल्सन थ्योरी ऑफ प्योर लॉ, कैल्सन थ्योरी ऑफ प्योर लॉ अगर हम अप्लाई जुरिस्प्रूडेंस में, तो वी कैन से जुरिस्प्रूडेंस इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, और आई कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। Constitution is the grand norm of society, किसी भी समाज का ग्रैंड नॉर्म है। तो इफ यू रिमेंबर कैल्सन थ्योरी, हाउ मेनी पीपल रिमेंबर कैल्सन थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म? कितने लोगों को कैल्सन थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म याद है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं। इफ यू सी कैल्सन्स की प्योर थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म, तो क्या है ग्रैंड नॉर्म? कैल्सन ग्रैंड नॉर्म क्या कहता है? कैल्सन कहता है ग्रैंड नॉर्म इज दैट बेसिक प्रिंसिपल दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी पर से, है ना, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स आउट ऑफ विच अदर प्रिंसिपल्स ड्रॉ देयर सुप्रीमेसी or draw their power. तो grand norm is the basic law of any society, or I can say it's a supreme law of society, where all other laws draw their validity. कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ दैट सोसाइटी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में समझे, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रैंड नॉर्म, और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समझें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रैंड नॉर्म को समझें तो सबसे ऊपर, है ना,
Kelsen has drawn a pyramid. Kelsen has developed a pyramid of constitution, pyramid of norms. तो सबसे ऊपर ग्रैंड नॉर्म आता है, तो सबसे पहले आता है ग्रैंड नॉर्म. इंडिया में ग्रैंड नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में ग्रैंड नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. फिर इंडिया में ग्रैंड नॉर्म के पास सेकंड नॉर्म कौन है? नॉर्म 2 जिसको बोलते हैं, वो कौन क्या है? स्टैट्यूटरी लॉज. लॉज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट्री लॉज. स्टेट ने बनाया, सेंटर ने बनाया, डजंट मैटर. फिर थर्ड नॉर्म 3 कौन सा है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना. जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्रिएट किए गए वो है. और फोर्थ कौन सा है? नॉर्म 4, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस पास होना, ठीक है, रेगुलेशंस पास होना. क्या कहते हैं, सबसे ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और सारे लोग उसके नीचे हैं पैरेलल. ये जितने भी लॉज हैं ये अपनी एनर्जी कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ कर रहे हैं. इनका जो पाथ है, इनका जो पाथवे है वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आ रहा है. दे कैन नॉट एब्रिज द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट बाईपास द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की कोशिश करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ ऑफ लैंड है जिसको कोई और लॉ बाईपास नहीं कर सकता. ऑल अदर लॉज डेवलप्ड देयर और ड्रॉ देयर वैलिडिटी फ्रॉम दिस लॉ, है ना. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करें तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करें तो ये वो कानून है जिससे सारे दूसरे कानून क्या करते हैं? अपनी वैलिडिटी ड्रॉ करते हैं. नो बडी कैन एब्रिज और टेक अवे द बेसिक प्रिंसिपल्स incorporated in this. Constitution can be written, cannot be written. Constitution can be oral constitution. For example, India has a complete written constitution.